Hello student, today we are talking about the UGC NET June 2025 paper 1 5 question and 20 concept. ठीक है paper 1 ठीक है let's start. Question number 1. God is great because he does great things. This inference committed which kind of fallacy? Option number D was the right answer. PTO principi. ठीक है option number D was the right answer. ठीक है ये solution देख सकते हैं. The fallacy of the circular argument or PTO principi. ठीक है it occurs when the premises presume openly to covertly the very conclusion that is to be demonstrated. So option number D was the right answer or correct answer. ठीक है next question मैं सब फॉलोइंग पर दिया हुआ है. ठीक है NCTE इसका जो मैच होगा ये 3 एजुकेशन फॉर टीचर्स. ठीक है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन. ठीक है इसका फुल फॉर्म होगा. एंड NCERT इसका ये किसके साथ जाएगा B2. ठीक है सो रिसर्च इन एजुकेशन NCERT रिसर्च इन एजुकेशन B2 एंड NBT ये जाएगा 1 के साथ. ठीक है NBT नेशनल बुक ट्रस्ट. ठीक है सो ट्रस्ट रिलेटेड बुक्स. ठीक है D1 C1. ठीक है एंड DIET D4 एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड डिस्टेंस इंस्टीट्यूशंस. ठीक है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशंस D4. ठीक है सो A3 B2 C1 एंड D4 वाज द राइट आंसर. ऑप्शन नंबर D. ठीक है ये पर हिंदी वाले भी देख सकते हैं. ठीक है ऑप्शन नंबर D वाज द राइट आंसर. ठीक है करेक्ट आंसर. ये पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं. NCTE इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन. ठीक है ये आ सकता है. व्हाट इज इट? A statutory body of the Indian government set up under the National Council for Teachers Education Act 1993 in 1995 is to formally oversee the standards and procedures and processes in the Indian education system. ठीक है this council functions for the central as well as the state government on all matters with regard to the teachers education. ठीक है NCERT the National Council of Educational Research and Training is autonomous organization set up in the 1961 by the government of India to assist the advise the central and the state government on policies and programs for qualitative importance in school education. ठीक है what is NBT इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल बुक ट्रस्ट. ठीक है is a Indian publishing house which is founded in 1957 as an autonomous body under the Ministry of Education of Government of India. ठीक है DIET District Institute for Education and Training इसका जो फुल फॉर्म है are a district level educational institutions that or institute that has been established in the East District of India by the Indian government. ठीक है यहाँ पर डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं और भी. ठीक है next question number 3. Which of the following ancient universities in known as the specialization in medicine? Option number B Takshila University was the right answer. ठीक है यहाँ पर आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हो डिटेल्स में. ड्यूरिंग द हिस्टोरिकल रेन ऑफ द गुप्ता पीरियड has been the encouragement of the education and knowledge branches in the higher education. Among the Nalanda University has been multiple branches of the knowledge and covered a wide range of the subject and branches. ठीक है and Takshila University was specialized in the medicine. Ujjain University was known as for the astronomy and Ajanta University also known as a popular learning art, architecture and painting. ठीक है
नेक्स्ट मैं एज द फॉलोइंग पर दिया हुआ है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल, A2 क्लीन डेवलपमेंट एंड मैकेनिज्म, and Monte protocol B4 uses out the chlorinated components, ठीक है। and C3 Paris Agreement nationally determined contribution, ठीक है। and D1 International Solar Alliance clean and affordable energy, ठीक है। देख सकते हैं डिटेल्स में, ठीक है। ये हुआ से राइट आंसर, ठीक है। The Kyoto Protocol was adopted as an international treaty that committed its signatories to develop the national program to reduce their emissions of greenhouse gases. Okay, so it had that aim to the clean development mechanism. The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan on 11th December 1997 and came into force 16th February 2005, ठीक है। Monte Protocol is an international treaty protect the ozone layer, ठीक है, and responsible for the ozone depletion. It was agreed on 16th September 1987 and entered into force or came into force 1st January 1989. And Paris Agreement is an international treaty on climate change adopted in 2015 and covers the following: climate change mitigation, adoption and finance, ठीक है, in draft 2015 and signed in 2016, ठीक है। International Solar Alliance formed in 2015 has to the primary objective to work of the efficient consumption of solar energy to reduce the dependency on the fossil fuels, ठीक है। टुडे लास्ट क्वेश्चन मैं ऐसा फॉलोइंग पर दिया हुआ है, ठीक है। रिसर्च टाइप एनालिटिकल रिसर्च was कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बताएगा, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट A2 and detective research B1 testing of a theory, ठीक है। incremental research C3 extension for development and empirical research D4 practical, ठीक है। empirical research practical, incremental research extension for development and deductive research theory testing research D1 by B1, ठीक है। टेस्टिंग ऑफ ए थ्योरी, एनालिटिकल रिसर्च, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। A2 ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर, ठीक है। और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाज द करेक्ट आंसर, ठीक है। डिटेल्स में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। एनालिटिकल रिसर्च गिव्स ए स्टडी ऑफ व्हाई एंड हाउ समथिंग हैज ऑकर्स, कॉज एंड इफेक्ट आर डीपली एनालाइज्ड, ठीक है। इट इज द ऑपोजिट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। Deductive research keeps an aim to test the theories. It is the opposite of the inductive research, ठीक है। Incremental research is an improvement to already existing something, like improving the existing and ideas, product and technology, ठीक है। डन एंड यहाँ पर और भी देख सकते हैं, इट हेल्प incremental research help to improve the reduce limitation to previous theories idea, ठीक है। Hence extension is a special features here it paired to the opposite of the innovative research, ठीक है। empirical research is an experimental based research performed with the test, hence it is a practical test of the theory, ठीक है। it is the opposite of the conceptual research in type of the research clarification, ठीक है। तो डन। इस तरह के वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।